नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, भारत, फरीदाबाद। मैं आपका दोस्त सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, भारत से, फरीदाबाद से आपसे बातचीत करने के लिए भारत की स्थिति के बारे में जो आज मौजूद है, हालत में क्या है, देखना मुझे। नमस्कार। भारत का संविधान, भारत की भविष्य, भारत वास्तविक क्या है, समझना बहुत आवश्यक। जो समझ जाएगा जितनी जल्दी उतना ही अच्छा इस देश के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए। भारत का संविधान अत्यंत महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति के लिए भारत में जितना अच्छा हो, इट्स बेटर फॉर ईच एंड एवरी वन, एवरी subject of our country, Bharat, India, to apprise about this document, constitution of this country, a religious document, a political religious document, a national religious document, not religion of faith, but a religion of facts, religion of trust, religion of reliability. Many religions are there that pertain to faith, that pertain to beliefs, disbeliefs, but this religion does not relate to beliefs or disbeliefs. This religion relates to facts of life. This religion relates to requirement of life. This religion document relates to demands of life and style of life, form of life, law of life, and what we have to give to ourselves and what we have to give to our society, our nation, and thereby to whole world. Constitution of India, Bharat ka Savidhaan, a document that everybody is bound by. It's better to accept this fact at an earliest, so that from beginning of education itself, from beginning of life itself, one can understand construction of this document, how it was done, who did this, and on what basis it was really done, what destiny was there, what privacy was there, what personality of document was there, and what destiny plus personality plus generality, which is called totality, was there in this document. It is not simply a book, it's not simply a resource, but it is soul of this nation. It is collective soul of people of this country. At that time they were 35 or 30 crores. Now they may be 137 or 140 crores, or they may be 500 crores in future. Nobody knows. But this document continues to be in force, and it is not easy to ignore this document, and it's also not easy to condemn this document and you can say override this document. That is not possible in current situation, and that will not be possible in future situation. Whatever speak one may give, whatever plan one may do. This is document by people, not by one association. This is document by country, not by one body. It's document by whole people, for whole people, adopted by whole people, approved by whole people, legislated by whole people, and implemented and to be implemented by whole people of this country, Bharat. I am proud of Bharat. I feel prideness in calling myself resident of this country, citizen of this country. I feel powerful myself in my mind and my body and my soul that I am a subject of this country, and that's my pride, my personal pride, because I belong to this country and I was brought up by this country. I was fed by this country. This country is my mother and father, and second to God, because I whatever I am today and you are today because of this country and not because of other countries. Though we all are on earth, because this country is our, you can say, such a valuable or invaluable both belonging, you can say, power of soul lies in body and also in this document for this country. Explanation has got no limit, it's boundless. Explanation no bound, and it has to be understood by everybody,
every child, every youth, every adolescent, every young, every adult, every senior, mature, immature, every class of people, every section of people, every professional, every non-professional, everybody must realize that one has to live in this country, complying with and abiding by whatever provisions have been included within its documents. Cannot be isolated yourself. You can realize this. You cannot say no, I don't accept. No, you have to accept. You cannot deny that. If you are a citizen of this country, if you want to live in this country, you have to accept this. You cannot say no because this is legal document. This is formal document. This is document, prime document, principal document, lead document of all laws that were made before independence and that continue to be in force post independence and that were additionally made post independence and that shall be made in future. All laws have to be enacted, come what may, without any limitations and reservations, only under this law, prime law, which is called Constitution. Means all institutions, if summed up, is equal to Constitution. You can say that way mathematically. Institutions plus institutions plus institutions plus institutions equal to co-institution, and all co-institutions, all institutions must work together simultaneously without any failure. If one institution fails, there is a defect in car, in Bharat vehicle, in Bharat racket, and one institution stops working means Bharat stops working, nation stops working. There are many institutions, but prime institutions are first of all Constitution, which is prime, and this means people of this country. Constitution means people of this country. Savidhaan Bharat ka means we all people. Under this constitution is under people of this country. There are three prime columns. You may say three prime institutions. You can say powerful institutions. One is judiciary, then it is executive and legislature. Judiciary has nothing to do with other two. There is a limit, silver lining between two, because judiciary is independent of executive and legislature, and there are legislature and executive. These three these three institutions are summed up, and these are headed by president of this country, and we define parliament after this, and parliament is called legislature, controller of this country, highest government body, that is parliament, and parliament is equal to Lok Sabha plus Rajya Sabha plus president of this country who preside both Lok Sabha and Rajya Sabha. We have to make it clear in our minds. Judiciary is not part of parliament. Judiciary has to check, support what parliament is doing. Though it has got no right to the proceedings of parliament, it has got no right to interfere, but it has a right to ensure if somebody reaches there, whatever has been done by parliament, what has been carried out, must be under compliance of constitution of this country. That is basic requirement. And there is a main page on constitution, and that's called preambles, which is master of this document, and this is people of this country. This is called spirit of this country, people's spirit, country's spirit, and that is preambles, which applies to each and everybody. Constitution comes later, first come principle, first come preamble of constitution, because preamble, though it may be one page or half page, but it has got vast meaning, broadest meaning of our people, what people intend to do and shall be intending to do. That is real structural design of this constitution. All laws, all provisions, all articles have been inserted in keeping in view what preambles dictate, and this is very strong mechanism. You can say this is not simple constitution, this is complete lifestyle that our people had, our people have, and shall be having. Lifestyle doesn't mean physical lifestyle. Lifestyle doesn't mean having status, cars, bungalows, or clothes and heating style and all that, or money wise how rich you are. Lifestyle means how this country, Bharat, wants, intends to live in.
Everybody has a right to live, everybody has a right to eat, and everybody has a right to rise in life in this country. And this constitution, this provision must allow everybody to be extended all opportunities of education, opportunities of health. That is called privilege or that's called right. There is a question. If it is a privilege or it's a right, if it is a right that can be complained, can be claimed in, and then all other rights, whatever are there, all descriptions are within this document, but they are not very well explained, but mandated. Explanation something is that mandate is there, means order is there, command is there, and you cannot avoid that. In that way, if you see, we have been discussing in this constitution what provisions are there in article way. I mean, article is there, and article there may be many different opinions on one article, what it says, and if you ask four people, you will find four interpretations of a construction, but real meaning is same, destiny is same, totality is same. One can say one thing and second person says the second thing. It doesn't make a difference to an extent. It doesn't impact upon someone else. And that is what constitution is. It's not question of that I have to speak fine about constitution, or it's not question of my pleasure or your pleasure. It's question of requirement. It's a question of how 137 crore people have to live together, because they have to live together. There is no other option. They have to live together, and that is what constitution supports them. Constitution mandates them. If constitution says something to one, it says to all. If constitution doesn't say one thing to one religion or to another religion, constitution says you are all equal in my eyes, and I have to order you to like this. Because constitution was made by all but applies to everyone, so it applies to me as well to you, and it has got full authority to place an order on me what I have to do as citizen of this country. This is what constitution is all about, and we have to understand this fact very well. If we understand this based on analysis, what is interpreted in that, and complete synthesis post analysis, we can really understand what practically these documents, articles presented in this mean by. And once you understand, there will be no problem in life to an extent legalities and law is concerned and how to live in this country. Because then you will consider everybody human being and not faith-based human. Because here now constitution has come in that people take for granted, really take for granted unity of country, secular status of country. They take into consideration section of country, society in which one is living, section where one is living, communities one is living, and it is a very fractured and dangerous fireball that has come into society, imaginary fireball and real fireball, without consideration of this constitution. Constitution speaks about and comments about. This ball is very dangerous because it's a fireball, and it can spark further, proliferate further, fire and fire everywhere. And once it starts, there is no control, because fire you cannot control fire, you cannot store fire, you cannot give command to fire. Fire touches whatever, and even it is air is spreads like anything. So this fire shall burn all of us if we do not know what we are and what constitution is. This fireball requires to execute it, demands to be executed immediately if we want to have peace in this country, uniformity, homogeneity in this country, and if we want to live in normal and you can say harmonious environment of where all people can live with all required laws, all applicable laws, all required, you can say, fulfillment of demands. But this has not happened. So it's not too late. Now it is too late. It's right time to have consideration, to deliberate, to have brainstorming about document of this nature, because this is not a text document, this is not an educational document, this is a document framed by all people who face various problems in life and keeping in abreast all those situations at the situation in those days, and of how people faced their life, how people lived in life. We have to understand what they want and what is their solution, how they should be given, because country belongs to each and everyone. One cannot say I am superior to you, and one cannot accept that I am inferior to you. That is a compromise. That is, there are people who are saying you are down and I am up. That is not acceptable here. It is a part of stair, and stair, there's a flight in stair which is called steps and rises and treads and landing, and then other steps and rises and then landing. It continues like this. Somebody is located at a step, somebody is located at riser, somebody is located at tread, somebody is located at waist,
and somebody is looking at lending, and somebody is looking at floor. It depends upon achievement of personal life, opportunity of personal life, and that is what everybody says. I am rich, I am poor, which is not acceptable. Poor, rich, and poor got different meaning, and there's nothing to do with constitution. Powers are there in constitution, authorities are there in constitutions, duties are mentioned in constitutions, which apply on all, and we have to accept by that. One may stand at floor, and one may stand at landing, and one may stand at rise. It depends upon one person how work, how much work one does, and how much recognition one gets, and how much advancement one takes in life. And that's why even then, after having been so rich or poor or advanced, one has to consider a subject of this country, and that is all end of game. You have to be equally considered every year, and that is what it is. So it's no simple document, it's life. It's your life, it is your guide, it is your guarantee, it is your, you can say, your guardian, it's guardian, your guardian. We have to accept it like that. Even if I like, even if president like, even somebody else like in this country, I can change this constitution. It's all foolishness to think as such, because nobody has power to win constitution, to overcome constitution, to kick constitution. No one has that power, especially in this country, and therefore it is much in demand that you cannot even think to destroy this document. You cannot even think to burn this document, because that is a crime. Because this is document for whole people and not for one person. This is document for nation, not for one individual. One has to understand that. This document is precious document, legal document, valuable document, life impacting document, like making document, like destruction document, like destroying document. This is that type of document, but it is in whole applications overall. So constitution cannot be simply considered as a lawyer's document or a ghost textbook or judge's document. No, it's for age and very a newborn baby and death when you're dead. Both are considered under this document. So this document is legal document, and every kid has to understand this. You cannot ignore. You cannot why else even people they have to understand this. And I think it should be part of this should be included in syllabus of primary school and whatever degree or course it is. Some knowledge must be imparted with students of this country, and that is what is required, because where you live, what's your country, first of all you must have knowledge of that, and before entering into having knowledge and grasping knowledge of other subjects, and that is what is required very importantly, significantly. It's not that I want to teach you about document. Question is not that. Question is it's awareness. It's an awareness that you must get this. I was also not aware, and people are in general not aware, except those who are lawyers, advocates, and those who relate to this kind of profession or field. They have good knowledge of this document. But layman person like me and layman person like lakhs and crowds in this country do not have knowledge, and I include myself also in that force of layman. So I am a layman to an extent this document concerned, but I am trying to learn what it is and how it is. I don't care what political people says, I don't care what lawyer says, and I don't care for whatever who says. But we have to understand what is written on that and think on that and contemplate on that and see what intentions those people had when they drew up this document in 1947 and before. That's what. So in that's a situation where I try to just understand this document and share with you what I could understand, what should be. That is the whole purpose of this video and other videos, many in sequence, that I thought constitution must be shared with you. Bharat Savidhaan, because it's very important. We are electing our member of parliaments and our assembly members and our all under this constitution, because we have got a voting right according to, and we have to elect our member of parliament, which is the highest position in this country. To an extent, legislature is concerned, member of parliament represents each and every citizen of this country to an extent constitutionality, so we cannot ignore that point. It's not prime minister that is elected by people directly. No, prime minister is not elected by people directly. There's no procedure mentioned in the constitution of prime minister election. It's just head of council, and prime minister can be appointed by president. Considering criteria of his eligibility, there's no criteria of eligibility except that person should have complete confidence, full confidence of Lok Sabha, and that person is named as prime minister. It's appointed by president, but that person has to be approved by Lok Sabha, and that's all qualification prime minister should have. So we have to understand this point of view. इतना आसान नहीं है. अभी हिंदी में बाद में बात करेंगे. अभी चलते हैं आगे. Let's go further about this, how it works and how it doesn't work. I was explaining last time, explained up to certain points, up to certain
Then say, now I'm certain Article 58. I think I had completed Article 58 of this Constitution. Uh, Not 58 actually, because somewhere. Because now I'll consider 52. 52 now there is this union. This is executive. No, is 52 Article 52. There shall be President of India. This Article 52. So it doesn't need any explanation on this behalf. Execute now 53(1). Executive power of Union shall be vested in President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution. 2. Without prejudice to generality, without prejudice to generality of foregoing provision of Supreme Command of Defence Force of Union shall be vested in President and exercise thereof shall be regulated by law. Once again, without prejudice to generality of foregoing provision, Supreme Command of Defence Forces of Union shall be vested in President and exercise thereof shall be regulated by law. Nothing in this article shall A. be deemed to transfer to President any functions conferred by any existing law on government of any state or other authority. B. Prevent Parliament from conferring by law functions on authorities other than President. Then it's 54. President shall be elected by a member of an electoral college consisting of elected members of both houses of parliament, elected members of legislative assemblies of states. In this article and in Article 55, state includes the National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Pondicherry. 55(1). As far as practicable, there shall be uniformly As far as practicable, there shall be uniformity in scale of representation in different states at election of president. For purpose of securing such uniformity among states, interstate as well as parity between states as whole and union, number of votes which each elected member of parliament and of a legislative assembly of each state is entitled to cast at such election shall be determined in following manner, and this manner is A. Every elected member Every elected member of his legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1,000 in quotient obtained by dividing population of state by total number of elected members of that assembly. If after taking said multiples of 1,000, remainder is not less than 100, less than 500, then vote of each member referred to in subclause shall be further increased by one. Each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing number total number of votes assigned to members of legislature, assemblies of state under subclause A and B by total number of elected members of both houses of parliament, fractions exceeding one half being counted as one and other fractions being disregarded. Elections of president shall be held in accordance with system of proportional representation by means of single transferable vote, and voting at each election shall be by secret ballot. In this article, its explanation is in this article, expression population means population as ascertained at last preceding
census of which relevant figures have been published, provided that provided that reference in this explanation to last preceding census of which relevant figures have been published relevant figures have been published shall, until relevant figures for first census taken after year 2026 have been published, be construed as a reference to 1971 census. The 56th President shall hold office for a term of 5 years from date on which he enters upon office, his office, provided that President may, by writing under his hand, address to Vice President resign his office. President may, for violation of Constitution, be removed from office by impeachment in manner provided in Article 61. President shall not, withstanding expiration of his term, continue to hold office until his successor enters in upon his office. Any resignation added to Vice President, addressed to Vice President under Clause A of Proviso to Clause L shall forthwith be communicated by him to Speaker of House of People. 57. A person who holds or who has held office as president shall, subject to other provisions of this constitution, be eligible for re-election to that office. And 58. No person shall be eligible for election as president unless one is citizen of India, has completed age of 35 years, is qualified for election as a member of House of People. A period shall be. Let me have some water. Sorry for disturbance. A person shall not be eligible for election as president of if he holds any office of profit under Government of India or government of any state of under any local or other authority subject to control of any of said governments. Explanation: for purpose of this article, a person a person shall not be deemed to hold office of profit by reason only that he is president of vice president of union or government of any state or is a minister either for union or for any state. 59. President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of its legislature of any state, and if member of either House of Parliament or of a House of Legislature or any state be elected president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on date of date on which he enters upon office of president. President shall not hold any other office of profit. President shall be entitled without payment of rent to use of his office, official address, residences, and shall be also entitled to such emoluments, allowances, and privileges as may be determined by Parliament, by law, and until provisions in that behalf is so made, such emoluments, allowances, and privileges as are specified in second schedule.
Emolument and allowances of president shall not be diminished during his term of office. Every resident and every person acting as president or discharging functions of president shall, before entering upon his office, make and subscribe into in presence of Chief Justice of India or in his absence, a state senior most judge of Supreme Court available, an oath and administer oath and affirmation in following forms. In forms, I such and such do swear in name of God that I will faithfully execute office of president or discharge functions of President of Bharat, India, and will, to best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and law, and that I will devote myself to service and well-being of people of India. When it now is up to 60, 61 starts, so let's go to 60. Let us 61 starts. So I have to finish now all this. Now I'll speak something about these articles of 50 in Hindi so that it's clear to everyone. It says भारत का संविधान भाग 5 मैं किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। ये जो पहले सॉरी दो रह गए आर्टिकल देखते हैं 57 लेट्स से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है देखने में डॉक्यूमेंट्स को। सो भारत का संविधान अभी हम पढ़ते हैं 55 आर्टिकल। यस भाग 5 संघ कार्यपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। मामन भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इस प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति के नियत होगा और इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। ये खैर राष्ट्रपति से भिन्न और पदाधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को विनिर्णित नहीं करेगा। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकरण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। एक अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडी क्षेत्र संघ शासित क्षेत्र हैं। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राजधानी क्षेत्र राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। आइए 55 पे जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापपान में एक रूपता होगी। राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में
समतुल्य तुल्यता प्राप्त करने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक प्रत्येक निर्वाचित सदस्य वैसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित तरीके से अवधारित की जाएगी। अर्थात किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या का उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग देने पर आए। यदि 1000 के उक्त गणितों की लेने के बाद गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड के में निर्देशित प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों का संख्या वह होगी जो उपखंड के और उपखंड ख के अधीन राज्यों को विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों में अनुसार निश्चित रख सके। यदि संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड क और ख के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक विभिन्न भिन्न को एक देना जाएगा और अन्य भिन्नों से उपेक्षा की जाएगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे विचार में मतदाता गुप्त होगा। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के में अधिनिश्चित की गई संख्या अभिप्रेत है जिससे सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंत पूर्ववर्ती राज्यों जनता से ओके, लेट्स मूव फर्दर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, हिंदी में पढ़ने में दिक्कत आती है बड़ी। क्या करूँ, बताना तो पड़ेगा लोगों को, आखिर भाषा है। इस अनुच्छेद से जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभी निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए, परंतु स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। 56, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। है संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद में रीति में चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। खंड एक परंतु के खंड के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। 57, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अंत
उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए प्रभावित हो जाएगा। 58 कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होता है जब वह भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने लगा है। हम्म। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत है। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उसका उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकेगा। एक एक अनुच्छेद के प्रयोजन के अनुसार कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद स्वीकार धारण नहीं कर सकेगा, नहीं समझाएगा कि वह संघ के राष्ट्रीय की उपराष्ट्रपति था या राज्य का राज्यपाल है, या अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। 59 राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी दोबारा पढ़ता हूँ, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस दिन से अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा, और ऐसे उपयोगियों पर ऐसे भत्ते विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करेगा, और जब तक इस निर्मल करेगा, उसके द्वारा है। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी तो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार उपलब्ध नहीं किया जाए तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी तरफ से विपरीत है हकदार होगा। राष्ट्रपति का उपलब्धियों और भत्ते उनकी पद अवधि के लिए कम से राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अब आते हैं 60 पर। हाँ, 60 ओके 60 every president and every person acting as president of discharging functions of president shall before entering his office make and subscribe in presence of Chief Justice of India, or in his absence, senior judge of Supreme Court. An oath is executed on the following terms. Yes. It's complicated. When
60. I had taken note, yes, which is okay. 61. When a president is to be impeached, yeah, impeachment has started in. When a president is to be impeached for violation of constitution, charge shall be prepared by either house of parliament. No such charge shall be preferred unless proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days, notice in writing, signed by not less than one-fourth of total member of whatever members of House has been given of their intention to move, move resolution. Such resolution has been passed by a majority of not less than two-thirds of total number of House. When a charge has been so preferred by the House or Parliament, other House shall investigate charge or cause of charge to be investigated, and the President shall have right to appear and to be represented by at such examination. This is Article 64, no, not 64, sorry, it's 61 4. Now, if a result of investigation, a resolution is passed by a majority of not less than two-thirds of those total membership of houses by which charge wins, charge was charge was investigated or caused to be investigated, declaring that charge preferred against President has been sustained, such resolution shall not have any to 60 to an election to fill a vacancy caused by expiration of term of office of president shall be completed before expiration of term. An election to fill a vacancy in office of president occurring by reason of his death, resignation, or personal removal. Other article, an election to fill vacancy in one office of president occurring by reason of his death, resignation, or removal, or otherwise shall be held by. Hmm. Okay. An election to fill vacancy of the president occurring by election without the resignation or removal of others shall be held as soon as possible after in no case later than 6 months from date of occurrence of vacancy, and person elected to fill vacancy shall subject to provision of Article 56. They are entitled to have a hold office for full term of 5 years upon his office. There shall be a Vice President of India, the 63. So let's put up to 62 first of all. 62 तक हम पूरे करते हैं हिंदी में. Let me check. यार ये बटन कर रहा है उसका. आसान नहीं होता कई बार पढ़ना भी. अपने मन से तो कर लें, पर यहाँ 60 हिंदी. यस आ गया. 60 हिंदी में बोल रहे हैं हम. प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कर्तव्य को अदा कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने के पहले भारतीय मुख्य न्यायिक. अच्छा ओके, चलते हैं आगे. 62.
यस 63। ओके 62 तक करेगा ना, क्या कर रहा है यार, सही करने लगा। 61। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति 60 पहले पढ़ दो और आगे ओके 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 60। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वाह कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रयुक्त में शपथ देगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। मैं अमुक नाम का व्यक्ति कि मैं श्रद्धापूर्वक शपथ लेता हूँ, श्रद्धापूर्वक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षा करूँ और भारत की जनता की सेवा और कल्याण से विरत नहीं होऊंगा, निरत नहीं होऊंगा। 61। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो संसद का कोई संसद आरोप लगाएगा। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकेगा तब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में आत्मनिष्ठ नहीं है जो कम से कम 14 दिन के ऐसी लिखित सूचना के लिए दिए जाने पर पश्चात प्रस्तावित किया जाए। मैं जिस पर उस सदन का कुल सदस्य संस्था के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है और उस सदन की कुल संसद संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प के राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अंत्यवर्ण करने के लिए क्या यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है कि संकल्प का प्रभाव किस प्रकार पारित किए जाने के तारीख के राष्ट्रपति की उस यद से हटाना होगा। 62। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति की भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथा शीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 महीने से बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्त की भरने के लिए निर्वाचित
वरिष्ठ व्यक्ति अनुच्छेद 54 के तुरंत के परंतु यथार्थ रहते हुए अपने पद ग्रहण में सफल रह सकेंगे, बचा सकेंगे। हाँ, अनुच्छेद 56 के प्रावधानों में अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इस तरह से लोग चलते हैं। Well, it's very boring, of course, but it's very interesting, and it's very interesting in the sense that one should know about this. President of this country, Bharat, who is head of government of this country, head of executive, prime minister is working functional head, who is sitting at head of council of ministers. Council of ministers is second to president, and council of ministers legally is competent to advise to president of this country regularly, frequently, and whenever specific requirement is there. Prime Minister constitutionally is not higher than President. President is by people, has come to office by after election, and PM is indirectly elected by member of parliament, not directly. Means public does not elect PM, public does not elect MP, ministers, and does not elect Indians, but MP does. Hmm. President means government of India, as I said. President means President of Lok Sabha and Rajya Sabha. President means Supreme Commander of Armed Forces. And with an understanding, we say first citizen of this country, though there is no specification, no article included within Constitution that President of this country is first citizen. It is understood, honorary you can say by honorary itself. It is very important for all of us to understand silver line division between president and prime minister, between prime minister and chief justice, between chief justice and president, and between God and all these. That is very, very interesting to know about that. We should not be ignorant. Ignorant होने से कुछ नहीं होगा. Let me finish vice president and we'll talk to you. I'll talk to you because as much as we are entering into constitution clauses, constitution articles, more and more information is revealed, and we have to receive this information in every respect, so as each of us understand what does constitution mean. Article 63, there shall be a Vice President of India. 64, Vice President shall be an ex officio chairman of Council of State and shall not hold any office of profit. Hmm. Vice President, okay, shall be ex officio chairman of Council of States and shall not hold office other than profit. Office of profit. Provided that during any period when Vice President acts as President or discharges functions of President under Articles 4, Article 65, he shall not perform duties of office of Chairman of Council of States and shall not be entitled to any salary or allowances payable to chairman of council or, or council of states under 65.
In event of an occurrence of any vacancy in office of president by reason of death, resignation or removal or otherwise, vice president shall act as president until that date on which a new president elected in accordance with in accordance with provisions of this chapter to fill such vacancy and yeah. Okay. Once again, 65 is even okay. In event of occurrence of any vacancy in office of president by reason of his death, resignation or removal, or otherwise, vice president shall act in president until the date on which okay, accordance which with the provisions of this chapter will schedule of to fill such vacancy enter upon his office. Okay, when president is unable to discharge his functions owing to absence, illness, or any other cause, with vice president shall be discharge his functions until date on which president assumes office to his duties. Vice president shall during and in respect of period while he is so acting as or discharging functions of president have all powers of immunities of president and entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be emoluments, allowances and privileges as are specified in second schedule. 66. Vice President shall be elected by members of an electoral college consisting of hmm, Vice President shall be elected by members of electoral college consisting of members of both Houses of Parliament in accordance with system of proportional res- representations or right, right. Hmm. Go run here. I think with the system क्या होता है यार? Vice President shall be elected by a member of an electoral college consisting of members of both Houses of Parliament in accordance with system of proportional representation by means of single transferable vote and voting at such election shall be by secret ballot. Vice President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of Legislature of any state, and if member of either House of Parliament nor of a House or of Legislature of any state be elected Vice President, he shall be deemed to have vacated his seat and office and Vice President. No person shall be eligible for election as Vice President, provided as per no person shall be elected for election as Vice President unless he is citizen of India, has completed age of 35 years, is disqualified for election as a member of Council of State. A person shall not be eligible for election as Vice President if he holds any office of profit under this under government of India or government of any state or union territories and union territories. A person shall not be eligible for election as Vice President if he holds any office of profit under Government of India or Government of any state or under any local or other authority subject to control of any outside government. For the purpose of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit
by reason only that he is president or vice president of this union or the government. Okay, 67. Hmm. Anyway, 67. So let us see what is happening here. Yeah, I'm fed up with this mouse. I'll speak in Hindi, of course. This is article. Let me see how it's. भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान उस राज्यसभा के सभापति के पद से कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के राष्ट्रपति का संदेश वेतन के भत्ते का हकदार नहीं होगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण या अन्य कारण से उस पद में हुई व्यक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी व्यक्ति की को भारत के लिए भरने के लिए इस अध्याय के उपलब्धों अनुसार नियोजित नया राष्ट्रपति अपना ग्रहण करता है। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वाह करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियों और उपलब्धियों होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों भक्तों और विशिष्ट अधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपलब्ध नहीं किया जाता है तब तक वैसी उपलब्धियां भक्तों और विशेष अधिकारों का जो दूसरे राष्ट्र में विशिष्टताएं हकदार न रहेगा। कर रहेगा 66 उपराष्ट्रपति का नियम संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनाने वाले विधेयकांड में सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा और ऐसे निर्वाचन में मतदान होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी निर्वाचन के विधानमंडल के किसी सदस्य कोई ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसके उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण को तारीख से रिक्त कर दिया गया है। कोई व्यक्ति इत्तेफाकपूर्ण क्या हो रहा है
उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानसभा के मंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि यह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पदग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित है। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य को सरकार के अधीन अथवा उप सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी राजस्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन क्षेत्र का पात्र नहीं होगा। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा जो वह संघ का राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या नहीं। इसमें डाले हैं इन्होंने बहुत चीजें। और कल रात 3 घंटे बिजली नहीं, फरीदाबाद में थक गया, नींद आ रही थी, जागना पड़ा, इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बिजली नहीं आती है, 24 घंटे देने का वादा किया था। एनीवे, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। उपराष्ट्रपति अपने पदों की तारीख से 5 वर्ष के अवधि तक के पद धारण करेगा। चलो अब देखें क्या हाल है। राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति, president and vice president, we have reached to some level where we can understand what we are. After all, an understanding is a must. It's not what we have understood, it has what has been understood. Understanding doesn't mean English understanding or Hindi understanding. Understanding means understanding of the structure of our constitution, structure of our governance. Be clear. Governance doesn't mean government of India only. आपको पता होना चाहिए, government doesn't mean government of India alone. Government doesn't mean government of a state alone. Parliament is a government, legislature is a government, executive is a government, judiciary is a government. These are all governments because they are working on behalf of union. Don't think court is not a government, court is a government. Ministry is a government, government is a government, and legislature is a government. All are governments. Don't be otherwise extra confused. Don't be extra confused. No need. Whatever is involved with constitution, it is governments. There may be NGO not under control of government, yet it works for government, it works for public. Those who are working with public in capacity of constitution, they are all governments. Election commission, though it's not a part of government of this country, but it's a government. Government in a sense is independent. It's taking responsibility of constitutional functions. That's why it's government. CAG is like that, it's not constitution, it's like that, and all other people who are responsible in constitutional rights are government. Only authorities which are directly related to government are supporting government. The various terms that have to be understood clearly. And if you understand clearly, it's not mathematics, again I'm telling you, it's not physics, chemistry, science, biology, legal, nothing. It's simply text given by someone in both languages. Though it was originally in English, but later on got in Hindi and some other languages. So it's not big, there's no mathematics, no trigonometry, no differential calculus, no differential equation. So you should know what you are reading. No need of a teacher, no need of a professor. Don't depend upon them. Just read at home, read when you are free, instead of wasting time in listening to songs, 11 songs, and
and doing all that. It's like listening. Don't listen. Hmm. Yes, मैं जो कह रहा हूँ वो आपसे संविधान के बारे में, जो भारत का संविधान है, इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है, इससे अच्छा डॉक्यूमेंट न पहले कभी हुआ तो ना हुआ है हमारे देश की पब्लिक के लिए, क्योंकि देश की पब्लिक को भी राज करा जाना है। देश की पब्लिक अपने आप आगे नहीं चलती है। देश की पब्लिक को ऐसा बॉडी चाहिए जो उसके राज्य को, उसके कानूनों को, उसके नियमों को बना पाए, उनको चला पाए, और उसके लिए बहुत सारे संस्थान बनाए गए हैं। तो संस्थानों में भारत का संविधान संस्थानों का मालिक है, देश का मालिक है, देश की पब्लिक द्वारा बनाया गया है। भारत का संविधान देश की पब्लिक के लिए है, देश के हर व्यक्ति के लिए है, और इसे मना नहीं किया जा सकता। मना करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यह देश का कानून, देश का नियम है, देश का सबसे बड़ा कानून, पहला कानून, जो सब कानून जिसके नीचे ही बने हैं और माने जाते हैं। चाहे वो कानून ब्रिटिश के 100 साल पुराना बना हो, लेकिन वो माना इस संविधान के नीचे जाएगा। सरकार इस संविधान के नीचे होती है, जुडिशरी संविधान के नीचे होती है, एग्जीक्यूटिव संविधान के नीचे होती है, सारी की सारी ताकतें शक्तियाँ जो भारत में है उसके नीचे होती हैं, और भारत का हर व्यक्ति इसके नीचे होता है। इस बात को आप जितना अच्छी तरह समझ जाएं तो समझ जाएं, नहीं तो मुश्किल आपको होगी, क्योंकि संविधान के अंदर सब कुछ होता है, और जब तक आप समझेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। यही संविधान आपको जीने का हक देता है, यही संविधान आपको बोलने का हक देता है, यही संविधान आपको सोचने का हक देता है, यही संविधान आपको वोट देने का हक देता है, यही संविधान आपको वो सारे हक देता है जो आपको कोई और नहीं दे सकता। यही संविधान आपको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहने का हक देता है, बंद राष्ट्रीय हक देता है। यही संविधान आपको समाज के अंदर रहने का हक देता है, बराबरी का हक देता है। सही संविधान आपको पैसा कमाने का हक देता है, आपको प्रोफेशन करने का हक देता है। यही संविधान आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, और यही संविधान वोट देने का हक तो देता ही है, इसके अलावा यह आपको बोलने का हक देता है, क्वेश्चन करने का हक देता है। ये संविधान आपको वो सारे हक देता है जो एक अच्छे आदमी में होने चाहिए, अच्छे सिटीजन में होने चाहिए। ऐसा कोई इसमें नहीं है। हो सकता है कुछ रह जाते हो, उसके लिए अभिमान होते रहते हैं, लेकिन जब अभिमान हो जाता है तभी वही स्टेटस में आ जाता है कि आपके हक क्या है, आपके अधिकार क्या है। जैसे मैंने पहले 51 में बताया था आपकी ड्यूटीज क्या है, वो ड्यूटीज भी आपको करनी होंगी, और आपको ड्यूटीज करने के बाद ही हक मिलते हैं, याद रखिएगा। हक फ्री नहीं मिलता, हक के लिए आपको काम करना पड़ता है। जिस तरह पैसा फ्री नहीं मिलता, उसके लिए मजदूरी करनी पड़ती है, कुछ काम करना पड़ता है, इसीलिए हक को पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हक आपको ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि हक हक है। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। आप जीवन में क्या सोचना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। आप जीवन में कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। आप जीवन में कैसे अपनी लाइफ स्टाइल चलाएं आपके हाथ में। आप सोचते तो बहुत कुछ है, बहुत कम होता है, सब कुछ सही नहीं होता। 100 बात सोचते हैं तो एक बात होती है, और कुछ भी नहीं सोचते तो कुछ भी नहीं होता। ये सब कैसे होता है हम जानते हैं उसमें। ये सब इसलिए होता है कि हमको पता कुछ नहीं, हम सो रहे हैं। भारत के लोगों को जानना होगा, भारत का संविधान बहुत आवश्यक है। अपनी शिक्षा छोड़िए दूसरी वाली, पहले इसको जान लीजिए। जब आप भारत के संविधान को अच्छी तरह जान लेंगे तो अपने दिमाग से काम करेंगे, अपने दिल से नहीं करेंगे। हमेशा याद रखो, किसी की बातों में मत आओ। कोई कितने से बड़ा प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, किसी की बातों में मत आइए। किसी की बातों में आने से हम जा रहे हैं। इसलिए भारत के संविधान को जानना बहुत आवश्यक था, और यही मेरा काम है आपको समझाने के लिए कि आप जितना जानेंगे उतना अच्छा होगा। आप बार बार सोचते होंगे ये बार बार वही बात क्यों करता रहता है। मैं नहीं कर रहा बात, ये आप कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते नहीं है कि क्या होता है। राजनीतिक दल आप से भी कम जानते होंगे, और बहुत से वकील हैं जो संविधान का केस तो लड़ रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी वकील हैं वो भी इतना नहीं जानते जितना उनको जानना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, पास करके आ गए, फिर कौन संविधान को याद रखे। कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे, किसी जूनियर को खैर बोलेंगे तुम पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा तो होता है। उसके बाद जब झूठ आगे बात खत्म हो जाती है, समझ नहीं आती, तो हम कहते हैं छोड़ो यार क्या कर रहे हैं। समझिए करना क्या है, पढ़िए। आप यहाँ पर अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हक से रहते हैं। किसी ने आपको बंदी बना के नहीं रखा है भारत के अंदर। आप यहाँ रहते हैं, पैसा कमाते हैं, खाना खाते हैं, और कुछ करते हैं जिंदगी में। पर पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, याद रख लीजिएगा। पैसा कमाना तो बहुत होता है, लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन बहुत कम कमा रहे हैं, बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे। गलत।
है, किसी भी वजह से रहा हो, मैं किसी देश की राजनीतिक पार्टी को दंड या इस बारे में गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो अपने लिए जी रही है, वो आपसे मुझसे क्या मतलब है, इसलिए बार बार उनको कहने का फायदा नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ज़िंदगी में शायद सैकड़ों लोगों की, सैकड़ों चीज़ों के, सैकड़ों चिंताओं करने की बातें याद रहें, आपको सिर्फ सब बातें याद रहें अपनी जॉब पर भी, वहाँ क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, हर फील्ड के बारे में आप जानते हो, लेकिन आपका अपना फील्ड किस हालत में है, किस किस व्यवस्था में हो, कैसे रह रहे हो, जी रहे हो, ये सब बातें तो चलती चलती रहेंगी। अपने को अपग्रेड करो, अपने को समझाओ, और ये खास तौर से मैं युवाओं के लिए कह रहा हूँ, किसी की बात में मत आओ, किसी भी नेता की बात में मत आओ, कोई कुछ भी बोलता रहे, सिस्टम सिस्टम होता है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता है, सिस्टम इंटीग्रिटी होती है। आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं सब, आपको पता है कंप्यूटर कैसे काम करता है, आप जानते हैं एमएस ऑफिस कैसे काम करता है, वर्ड कैसे काम करता है, एक्सेल कैसे काम करता है, और बाकी सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। एमएस वर्ड तो सब जान जाते हैं बहुत आसानी से, लेकिन जब समय आता है एक्सेल का, जो पहले लोटस 1 2 3 हुआ करता था, उसके बारे में सब नहीं जानते इतनी अच्छी तरह से जितना जानना चाहिए। इंस्टीट्यूट में आपको थोड़ी सी कमांड सिखा देता है, 15 20, और ये फार्मूला देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, सब निकाल लीजिए, ये वो बातें बता देता है जितनी उस बेचारे को आती है, लेकिन उसके बाद भी आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपने वो चीज़ नहीं हुई, उससे के बाद आपको खुद करना पड़ेगा, और खुद करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं और आपका समय ना लेते हुए आज सिर्फ यहीं पर बात को रुकूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी डॉसी हो गई है, और इस बिजली ने नाक में दम कर रखा है। 24 घंटे का वायदा करने वाले बिजली 6 साल में भी 24 घंटे नहीं भरवाए। दुख इस बात का हो रहा है, रियली वेरी अपसेट विद दिस गवर्नमेंट एंड लास्ट गवर्नमेंट have resulted in nothing, and no question of criticism of this government or not, no criticism. Question is fact. Congress did nothing for me, and these people are did nothing for me. For me means for you. When I say me and I, it doesn't mean personally I. It means citizen of this country. Every citizen of this country expected this government and last government to do something for them, but they didn't do that. Unfortunately, they could do that. Speech doesn't solve anything. When you work, you solve something. Speech only speech. It doesn't make a difference. The difference. You be you be religious, or you be person belonging to faith. Faith is logicless, religion is logicless, but system is not logicless, remember. So my dear, again I would say, don't waste time. If you want this country to move further, if you want this society to stay normal, or you prefer to go for a walk early morning, you wish, I go. If you know, I say, okay, fine. What to do about that? Well, I'm now going to close this. It's already 1 hour 20 minutes, and I'll take your leave so that I meet you again either tomorrow or maybe this afternoon. I don't know, it depends upon how weather works. If it's good weather, I'll still continue. But at this moment, I'm not feeling very well. Dhanyavad to all of you. Thank you to all of you for time. I know nobody has seen yet, but no problem. My purpose is solved. I pass my message to you. It is up to you people if you want to regard this. I'll keep giving messages. No problem if you come to this site to my video, or if you don't come. It is your prerogative. I am not forcing anybody, but I am forcing myself to do my duty, to do something for you, to do something for nation, something for our system, to society, and that's what I'm doing. I'm not getting anything from this, and I don't want as well. But because I have suffered in life due to so many issues, so many reasons, and I really hate that. I want to improve system with you people. If you want to improve, we have to force ourselves as people of this country, as body of this country. And thank you very much for this. Dhanyavad. Jai Bharat.
Jai Bharat, Jai India, Jai Bharat. Dhanyavad to each and every one of you. Thank you very much.